हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है अमिताभ मोहांती सर, जो जेएम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। आपने अपना आपका कीमती समय निकाल के हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। इट इज माय प्रिविलेज। सर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी आईआईटी रुड़की से और उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री ली थी। उनके बाद उनका 24 इयर्स का फिनेंशियल मार्केट में एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली इन फिक्स इनकम एंड इक्विटी साइड। प्रीवियस उन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड, अलायंस म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी में काम किया है और अभी वो जेएम म्यूचुअल फंड में एमडी एंड सीईओ की पोस्ट पे है। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा ग्लोबल मैक्रो के ऊपर है। आज कई सारी कंट्रीज वॉर जैसी सिचुएशन फेस कर रही है, कई कंट्रीज इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन फेस कर रही है। तो ग्लोबल क्या पर्सपेक्टिव आपका लग रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट सिचुएशन? तो ज़रूर ये बात तो ज़रूर है कि ग्लोबल मैक्रो में रिस्क बढ़ गया है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी बढ़ गई है, दो तीन जगह पे वॉर छिड़ चुका है। बट मुझे ये लगता है कि ऑल्सो एट द सेम टाइम, वेदर इट इज़ चाइना और द यूएस, दे आर ट्राइंग ऑल्सो देयर बेस्ट। कोशिश पूरी रख रहे हैं कि वो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो लोकलाइज्ड रहें। जी। ओके एंड दोनों जगह मैं देखता हूँ, वेदर इट इज़ यूक्रेन, रशिया और मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, आई थिंक सारे सुपर पावर्स, चाइना, यूएस, दे ऑल नो दैट ब्रॉडर वॉर अगर एस्केलेट होता है तो इट विल बी वेरी बैड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड देयर इकोनॉमी, एंड देयरफॉर पूरी प्रयत्न यही है कि ये लोकलाइज रहे। जी। एंड इसलिए वाइल नॉट नेगेटिंग द रिस्क, मैं ये भी चाहता हूँ कि एज लॉन्ग एज अंडर कंट्रोल रहे तो वी कैन हैंडल द फॉल आउट ऑफ दैट। एंड अगर मैं देखूं कि ये सब वॉर के बावजूद कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं, ऑयल प्राइसेस एक्चुअली नीचे आ गए हैं, सो आई थिंक द वर्ल्ड इज बिहेविंग इन अ वेरी काम मैनर। एंड while these are there in the background, I think the maturity level of handling ऐसे आउटकम्स काफ़ी बेटर हो गए हैं, कोई नी जर्क रिएक्शन खास नहीं हो रहा है। एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, ये अगेन मैं यही बोलूँगा कि लास्ट 2-3 क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जिस लेवल पे सेंट्रल बैंक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं शायद वहाँ तक ना आए, उसके 1-1.5% ऊपर रहें। बट मैं ये भी सोच रहा हूँ, मेरी ये उम्मीद है या मेरा ये अनुमान है कि सारे सेंट्रल बैंक्स एज लॉन्ग एज वो 1-1.5% ऊपर स्टेबलाइज हो जाए, फॉर द टाइम बिंग दे विल एक्सेप्ट दैट। मतलब चाहे वो पब्लिकली बोले कि वी आर कमिटेड टू दोज टारगेट्स, बट आई थिंक फ्रॉम देयर एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आप देखने जाओगे तो दे विल बी क्वाइट ओके विथ inflation stabilizing at these levels without spiking. So I think the worst of inflation is behind us, and therefore I think short-term rates jo hain, they also may be very close to their peaks. Right. So I would say that the time to worry about inflation was last year, not this year. Okay. And going ahead? Going ahead, as I think, देखिए क्या हो गया ना, 2008 से 2015 तक, नहीं 2008 से 2022 तक 15 साल जो है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो रहा और लिक्विडिटी ग्लोबली बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज हो गया था जी। तो इतने साल तक फॉर सम रीजन और द अदर इन्फ्लेशन वाज अंडर कंट्रोल, सो एवरीवन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेसेंट। सडनली हमने 2021 एंड 2022 में इन्फ्लेशन को स्पाइक अप करते हुए देखा, इंडिया में भी और कंट्रीज में भी जी। इंडिया में एक चीज अच्छा था कि हमारी सेंट्रल बैंक पहले से ही बहुत कॉशियस थी, हमारी गवर्नमेंट पहले से ही बहुत कॉशियस थी। हम लोग जैसे लिक्विडिटी मेजर्स लिए, इंटरेस्ट रेट मेजर्स लिए, वाज मच मोर बैलेंस्ड देन व्हाट द ग्लोबल सेंट्रल बैंक डिड, एंड देयरफॉर वंस द इन्फ्लेशन स्पाइक्ड अप, आई थिंक सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड ओवर, they realize that it's like a demon out of the bottle and all that. So they have moved very, very fast to take interest rates up and ensure that inflation comes down to manageable levels. I think we should not, मुझे तो लगता है कि next at least
3-4 क्वार्टर तक we should not expect central banks to cut rates or add liquidity. Okay. So I think ये जो phrase हम लोग बोलते हैं higher for longer, I think that describes the whole situation aptly. Right. And from our perspective, I think equity markets or fixed income markets, especially in India, they have internalized that. And the good thing about India is, from a corporate balance sheet perspective, there has been huge deleveraging of corporate balance sheets. So normally पहले के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा leverage होता था, ये interest rates companies को hurt करती थी. True. Right? आज के ज़माने में the impact will be much lesser because corporates are much better prepared. So again, we should not expect easy liquidity, but I think whether I'm very, very worried about it, no, I'm not very worried. Something we have to just keep a close eye on. Right. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन सर इंडिया के ऊपर ही है. जैसे हमने बात करी कि कई सारे देश वॉर फाइट कर रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं. वह सिचुएशन इंडिया में डेफिनेटली नहीं है. हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि आरबीआई ने बहुत अच्छे से मेजर्स लिए हुए हैं. तो एक कंट्री को ग्रो करने के लिए आई थिंक ये बहुत बेसिक पैरामीटर है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए. तो उसी से ग्रोथ आती है. तो आपके रीडिंग्स क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में इन कमिंग टाइम? देखिए, एक चीज तो है कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है जी. मतलब ये मैं अगर जनधन अकाउंट्स की बात करूं, मोबाइल बैंकिंग की बात करूं, डिजिटाइजेशन की बात करूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं जी. रेलवेज में फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, मेट्रो एक्सपांड हो रही है, मेट्रोज इंटरनल सिटीज में एक्सपेंड हो रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चीज़ें जो पहले बहुत कम हुई थी जी, वो आज देखने को मिल रहा है. राइट. पहला. दूसरा, एज आई सेड, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ गया है. ठीक है. एंड बिकॉज वी हैव नॉट succumbed to the excesses of the other governments, I think the excesses in our systems are much better, much lower, and therefore our overall macro situation is infinitely better. Also, if I look at it, I look at China, I look at Europe, I look at US, India is shining from a growth perspective. And especially with China +1 and all coming in, there is lot of investor interest, not only from a equity markets or a capital markets perspective, lot of interest from an investment perspective. So lot of foreign manufacturers, offshore manufacturers are looking to de-risk from China, yes, come to India, set up their manufacturing facilities. Lot of their global supply chains are now getting integrated with India. So I think if I look at the next medium to long term view, I believe India is on a very, very good structural growth path. Having said that, we cannot ignore the risks arising out of global macros. And एक चीज आप हमेशा याद रखना, that markets and economies are not always in tandem in the short term. Yes. Okay, so while the economy will continue to do well, if there are adverse events, however low probability, if they happen in a global macro, if there is flight of foreign capital to safety, it can impact the Indian markets. Maybe for the short term, but it can impact. So investors and advisors like yourselves have to keep that in mind. Yes. Okay? But overall, if someone has a 10, 15, 20 year kind of a view, I always tell people that the kind of positive surprises that this country will bring, people think we have already done a lot, but I believe that we have just covered a very small fraction of the journey that we are going to cover over the next 2-3 decades. So yes, I think people have to manage the volatility and stay committed to the process of whatever their investment is, and they will have very, very good results. Yes. Despite all the challenges, we can say वो that तो आएगा. देखो क्या है कि वो challenges तो आते जाते रहेंगे, मार्केट 10-20% ऊपर नीचे होते रहेगा. मतलब you can never ignore that, right? But as long as you don't react to those moves, you are aptly invested as per your risk profile. See, I'll tell you very honestly, today the most important perspective that an investor or an advisor needs to have is,
फ्रॉम अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव उसका रिस्क एपेटाइट और वॉलेटिलिटी एपेटाइट क्या है, right, and to position his portfolios accordingly. I think that will be the single biggest true, aspect of someone's personal investment. yes, That's what I think. यस। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं आज। म्यूचुअल फंड और एसआईपी काफी आसान शब्द हो गए हैं लोगों को समझने के लिए, और छोटे से छोटा निवेशक भी म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। जेएम म्यूचुअल फंड आज के सिनेरियो में काफी नया नाम है लोगों के लिए। तो थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम किया हुआ है, तो क्या नई प्रोसेसेस और क्या प्रोसीजर आप इसमें सेट करने वाले हैं या ऑलरेडी इन प्लेस है, और दूसरों से किस तरह से हम अलग मैनेज करेंगे? देखिए, अगेन इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और कभी कभी मैं यही बोलता हूँ कि हम शायद बहुत कुछ अलग नहीं करेंगे जी, ठीक है। द वे आई लुक एट इट कि आई डोंट हैव टू ग्रो, मेरी जो ग्रोथ होगी हमारे म्यूचुअल फंड की, it's not at the cost of others. True. Okay. The way I look at it, that our industry is around 4.7 odd % of household savings or something like that. The global average is much more. Certain countries are even higher, मतलब 15, 16, 17%. So the opportunity for the industry is huge because we are growing as a economy. We are growing as a part of the financializations of household savings is growing, and therefore the penetration of a growing market is going to increase. So the thing is large, and we remain committed to the journey, to the focus. Our endeavor always, a lot of people talk about returns and all. Our focus is a lot about risk. True. Okay. If you look at something which we genuinely believe in and as a part of our DNA believe in, is managing risk and trying to manage downside protection in an adverse market. True. Okay, so our entire focus of our equity, fixed income is to ensure that while we may perform slightly better or thereabouts in a rising market, we have to protect our investors and our portfolios in an adverse market. So that is point number one. Right. Point number two is more than being flash in the pan. Our investment team is extremely focused on consistency. Our belief is if you are consistent in the medium term, in the long term, you will be amongst the top performers. Very true. Okay. So we are keeping it simple. Satish Ramanathan, जो हमारे CIO हैं, उनका ऑलमोस्ट 3 decades प्लस का एक्सपीरियंस है। उनकी जो टीम है चैतन्य और आसित, दे हैव ऑलमोस्ट 1.5 to 2 decades, क्लोज टू 2 decades, 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। इवन हमारा जो रिसर्च टीम है, मतलब कम से कम 7-8 साल और कहीं ना कहीं 12-13-14 साल का एक्सपीरियंस है। सो इट्स अ वेरी एक्सपीरियंस टीम विच हैज गॉन थ्रू मार्केट साइकिल्स, विच हैज गॉन थ्रू डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, and we are very very focused on the simple things which create valuation. Obviously valuation itself is something we are very focused on, but we follow something called the geek model, GEEQ, okay, which is growth in earnings and earnings quality. Yes. So we are not only focused on growth, we are also looking at where is that growth coming from. Okay, and बहुत ही सिंपल चीज सतीश के शब्दों में मैं बोलूंगा कि we are big believers in cash flows. Profitability or valuation which are not backed by visibility of cash flows is something we stay away from. Okay, this is a very old fashioned but never goes out of fashion, if I may say. टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जिसे कहते हैं। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, और अल्टीमेटली आप देखोगे वो businesses which over a period of time becomes cash positive and through actual positive cash flows, they only survive and they only create the value for so this thing. So starting from Warren Buffett ले लीजिए, बहुत से iconic investors, इनका फर्स्ट रूल यही है जी, एंड हमारा भी फर्स्ट रूल यही है। तो एनी वैल्यूएशन विच इज नॉट backed by a good business model, which is not backed by emphasis on cash flows, low to moderate leverage. We do not like very highly leveraged kind of companies.
So we look at those and then we try to pick those up at appropriate valuations. And you will see that even though our fund has been small, if you go back and look at our fact sheets, you will see that the quality of stocks, even in a small portfolio, has always been good. Right. So we always believe in good stocks. We do not look to buy stocks just for a momentum kind of a this thing, because we want to be known for being prudent investors, which look at quality to invest. And I believe by doing these small things right, focusing a lot on research, we have one, even though we are small in size, we have a dedicated research resource which only looks at macro analysis. Okay, because like your first question was about global macros, Right. second question was about Indian macros. We also believe that macros are going to play a big role going forward on asset pricing, valuations, etc. So we have a dedicated resource for that. Very good resource, very good analysts. We are looking to add additional weight to our analyst, because we believe a good fund management team is good only if it is backed by an exceptional research analyst team. So we are building that up. So simple building blocks है, और आई थिंक सिर नीचे करके ह्यूमिलिटी के साथ काम करेंगे तो अपना परफॉर्मेंस विल बी अ डिफरेंशिएटर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस विल बी अ डिफरेंशिएटर. राइट. मेरा आखिरी सवाल है. फॉर्चुनेटली हम ऐसे टाइम पे मिल रहे हैं कि जहाँ शॉर्ट टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है ड्यू टू ग्लोबल रीजंस. तो आर वैल्यूएशंस लुकिंग अट्रैक्टिव टू जेएम ग्रुप? सर देखो, इंडिया इतना डाइवर्स मार्केट है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी पॉकेट्स ऑफ ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन, राइट? एज फंड मैनेजर्स we constantly look at valuations, and as I said, we look at the PEG ratio, P over expected growth, etc. So there has been some, I would not say that valuations were very stretched. Price movement has happened a lot, but if you actually look, it has been backed by some amount of good earnings growth as well. Right. Okay, so if I look at valuations, I would say that valuations were moderate to slightly overvalued. Maybe there will be pockets of maybe in certain small caps or mid caps where there, but again, as I said, we are not concerned with overall market valuations. We keep on looking at stocks which we believe have good stories. We look at stocks which have good emerging stories, okay, which are not necessarily absolutely correlated to the market. Right. So these are the kind of stock picks that we do, and as I said, we are very, very conscious about valuations. We will not chase valuations, but in any market, you will find some good stocks and good sectors which are out of favor, and therefore that keeps on attracting us. Right. But at the overall level, we are having a slight move towards defensives, because we believe that there are risks increasing to a certain extent, and because the market has had such a good run, except for the last 2-3 दिन, things have been doing quite well. So being a bit defensive and maybe just moderating our performance in favor of risk makes a difference to us. So that's personally what we are doing. Right. आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपका 24-25 साल का फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपीरियंस है और काफी सारे इन्वेस्टर्स को आपने देखा होगा कुछ छोटी या बड़ी गलती करते हुए. तो हमारे इन्वेस्टर्स के साथ आप कोई एक चीज अगर शेयर करना चाहे कि नॉर्मल ये ह्यूमन बिहेवियर रहता है कि इन्वेस्टर कहीं ना कहीं गलती कर देता है और किससे वो बच सकते हैं, या ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज ला सकते हैं फॉर अ बेटर इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस? पहले तो मैं बोलूँगा कि अपने जो छोटे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके विजडम को मैं दाद देता हूँ. आई थिंक their conviction in the India journey has been much better and more positive than some of the even global fund managers and even some Indian fund managers. So when experts lost faith, they kept on investing. So first of all, I bow my head and respect that. Most importantly ना, मतलब एक ही चीज मैं बोलूँगा इन्वेस्टर्स को, and I'm sure through the SIP model they are taking care of that. Yes. But I would only say that
आपको यही मन में एसेट एलोकेशन देखना है जी, और ऐसे देखना है कि अगर आज मार्केट 20 से 25 पॉइंट का करेक्शन हो जाए तो आपकी रात की नींद ना जाए जी, अगर वो आप बोल सकते हो तो आप ठीक कर रहे हो, जी, ठीक कर रहे हो। और अगर वो आंसर है कि नहीं मेरी रात की नींद चली जाएगी, then you might be overexposed to a risky asset class and Yes. therefore you should trim your positions. Yes, yes, I think this is the most important. That's the most important thing, and it is for every individual and his or her advisor to figure Yes. that out. बस यही करना कि सर ये आपका वैल्यू है आज, कल इससे 20-25% नीचे आके 6-7-8 महीने तक वैसे रहेगा तो आप इसको हैंडल कर पाएंगे या पैनिक करेंगे। नो इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट अगर आपको रात को नींद नहीं आती है। ट्रू। ये आप हमेशा बस एक ही चीज मेरे हिसाब से आपको ये आपको याद रखना चाहिए। I think that is the ultimate thing. Absolutely. जो चीज हम पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं, that should not panic us. Exactly. Exactly. और वो होगा तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एज आई सेड मार्केट्स नीचे ऊपर जाते हैं बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। इट इज दैट यू शुड नॉट गेट मतलब आप डर और दहशत से आप अपना पोजीशन काट के निकल ना जाओ मार्केट से एंड देयरफॉर नॉट बी देयर व्हेन दिस लार्ज uptrend happens. Yes. That is the biggest mistake someone can make, and therefore if your appetite is 60% equity, be 60%, don't be 75-80%. If Exactly. Asset if you are at a different stage of your journey and it has to be 30-40%, stay there, but then stay there. That itself will grow enough to give you that wealth creation over a reasonable period of time. Very true, very true. So that was all from global perspective to Indian perspective to how an investor can avoid mistake and improve their investing journey. Thank you so much, Amitabh sir. Thank you so much. No. The pleasure, privilege, honor was all mine, and I'm so glad that we could do this. I could interact with you, and through you to your investors. It has been really a pleasure. Thank you so much. Thank you so much, sir. My pleasure.